हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉन्डरिंग हीरो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स कि आप या तो आइदर वियतनाम जाने के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो वियतनाम जाने का प्लान बना चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो वी गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट व्हेन शुड यू गो टू वियतनाम, हाउ टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, हाउ टू बाय द सिम कार्ड, currency exchange, the itinerary, where should you go, how do you travel between the cities, how do you travel within the city, everything about how should you plan your trip. And if you wait till the very end, we're also going to tell you about the budget that you would require to spend during this trip. So we're going to start with when should you travel. The best time to travel to Vietnam would be between the months of November to April, because उस time पे the weathers are good, they are not too hot, and also उस time पे the rains are as good as none. We went in the month of August. So August and September you can still expect some rain, but not extremely heavy or not continuous rain. तो आप अगस्त से अप्रैल के बीच में कंसिडर कर सकते हैं. Then May, June, July is usually extremely hot, so we would recommend that कि आप उस टाइम पे अवॉइड कर सकते हैं. सेकेंडली अब बात करते हैं वीज़ा की. तो क्या इंडियंस को वीज़ा चाहिए? Yes, Indians require a visa to enter Vietnam, and you can procure this extremely easily. एक ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है वियतनाम गवर्नमेंट, जिसमें आप जाके एक छोटा सा फॉर्म है उसको फिल आउट कर सकते हैं. आई शेयर दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 इमेजेस अपलोड करनी है, एक आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो की एंड दूसरी आपको अपने पासपोर्ट के फ्रंट पेज की फ़ोटो अपलोड करनी होगी. एंड एक से छोटा सा फॉर्म भरना होगा विद मिनिमल डिटेल्स विच शुड नॉट टेक यू मोर देन 5 to 10 minutes. एंड उसके बाद जाके आप स्टेप 2 में रिव्यू कीजिए पूरा का पूरा आपका फॉर्म. स्टेप 3 यू मेक द पेमेंट. So for a single visit you have to pay $25 for a 30-day visit, जो कि आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं with the help of your credit card, debit card. And आपको बस ऑनलाइन ही सबमिट करके आपको within 3 to 5 days आपके मेल पे वीज़ा आ जाता है. So that's extremely easy to get. Now तीसरी बात करते हैं कि where to go in Vietnam. A tentative itinerary. Vietnam is a long stretch of land जो कि आपका नॉर्थ में हनोई एंड साउथ में हो ची मिन के बीच में यूजुअली लाई करता है किसी भी टूरिस्ट के लिए. एंड दीज आर द 2 डेस्टिनेशंस जहाँ पे आपकी मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. एंड मेजॉरिटी ऑफ द फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया आइदर एंटर फ्रॉम हनोई और हो ची मिन एंड एग्जिट फ्रॉम द सेम. सो यूजुअली व्हाट पीपल डू इज कि आप या तो हनोई नॉर्थ से एंटर करके आप साउथ में हो ची मिन से एग्जिट कीजिए और दी अदर वे अराउंड. बट आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 7 to 10 days लेके जाइए, because there is a lot to explore in Vietnam. So what we did was we started with Hanoi. Hanoi के अंदर आप आराम से 1-2 दिन घूम सकते हैं. There is this famous train street जो आपने बहुत जगहों पे देखी होगी. This is in Hanoi. Then इसका एक जो old town area है वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं. It's a bustling place, especially during the weekend. You ought to be here. And from Hanoi आप आसपास भी कुछ जगहों पे जा सकते हैं. सो देयर इज दिस अलोंग बे जहाँ की क्रूजेस बहुत पॉपुलर है. सो ये जो आप वियतनाम देखते हैं वेयर इन यू हैव स्मॉल हिल्स इन द सी, ये सब आपको अलोंग बे में दिखेगा. तो देयर आर अ लॉट ऑफ क्रूजेस. कुछ हैं जो डे क्रूजेस जो आपको आपके होटल हनोई से पिकअप करके लेके जाएंगी, आपको पूरा दिन का क्रूज दिखाएंगी, आपको activities कराएंगी, they'll provide lunch and then they'll drop you back. So you can, if you're short on time, you can do those one-day cruises, and if you have enough time, you can do overnight cruises also. तो आप proper एक अपना cabin book कर सकते हैं and you can spend a nice 1 night 2 days in that cruise and then head back to Hanoi. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, there is Ninh Binh also which is close to Hanoi. This used to be the old capital of Vietnam. तो यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा मिलेगी. अगर आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको सीनिक लैंडस्केप्स देखने में इंटरेस्ट है, देन Ninh Binh इज़ अ ग्रेट प्लेस. वहाँ पे आप 1 से 2 दिन लगा सकते हैं. तो हनोई के बाद आप जा सकते हैं दनांग, विच इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ हनोई एंड हो ची मिन, विच इज़ स्टिल क्वाइट अ लॉट ऑफ डिस्टेंस. तो आप दनांग यूजुअली लोग जाते हैं फॉर दी हैंड्स ब्रिज, जो कि बहुत जगहों पे आपने फोटोज में देखा होगा. एंड दैट इज इन द मिडल ऑफ एन अम्यूजमेंट पार्क विच इज़ वेरी क्लोज टू दनांग. सो आप दनांग को अपना बेस बना के यहाँ से फॉर अ डे टूर आप बाना हिल्स जाके आ सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्गर एंड इफ़ यू वांट टू experience and absorb the Bana Hills better,
आप ओवरनाइट भी रुक सकते हैं. देयर आर होटल्स विद इन बाना हिल ऑल्सो, तो आप वहाँ पे जाके एक रात गुजार सकते हैं. Another place is Hoi An, which is a UNESCO World Heritage Site, which is very close to Da Nang, just about half an hour to 1 hour drive from there. It's a beautiful old town, which is especially known for its lanterns in the river. आपको हर evening बहुत सारी boats दिखेंगी, your lanterns. It's a lit up place. The old town has all yellow buildings, so the vibe is extremely beautiful. And you should definitely go for a one-day tour if you're in Da Nang to Hoi An. And Da Nang in itself has a lot to offer. It's a beautiful place, especially its beach. So it has the Mikhe beach, which as per Forbes is one of the top 6 beaches in the world. It's extremely beautiful. So आप एक पूरा दिन उस beach पे भी enjoy कर सकते हैं. And in the evening, there is a night market. There is a dragon bridge that is very popular. So आप ये 3-4 दिन Da Nang के अंदर enjoy कर सकते हैं with that as the base. And so next you can go to Ho Chi Minh. Ho Chi Minh is like the financial capital of Vietnam. So if you compare it against India, Ho Chi Minh is like Mumbai, which has all the tall buildings, and Hanoi is a little more cultural place and is the capital of the country. So Ho Chi Minh में especially I would recommend you to go to the War Remnants Museum. So there was a war in Vietnam, as you may have heard of, between the 1950s and 1970s, wherein people suffered a lot of lives were lost. So उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, what were the hardships of the people, वो सब कुछ बहुत ही beautifully portray किया गया है in that museum. So that is worth a visit for sure. And that shuts by 6 p.m. So I would recommend कि आप अपना timely plan करें उसको. And in the evening, you can go to this walking street that there is. There are a lot of clubs and bars that you can spend your evening in, especially the youth would enjoy. So Ho Chi Minh is a great party place in the evening. Uh, Along with that, if you have more time, there is a day tour that you can take from there, which is called the Coochie Tunnels, which is very close to Ho Chi Minh City. So during the war, at the same time, these guys, the villagers, had created a network of underground tunnels, which was about 120 kilometers long. So you can go there and look at the entire area. A lot of traps that were put in by the villagers to catch the army folks and to safeguard themselves. And you can also go inside the tunnels and experience how people used to live how and what they had built inside. In addition to that, there is a firing range wherein you can hold an actual AK-47 and fire it. So if you're interested in all those things, it's a great one-day tour that you should certainly go to. And if you still have more time, there's one more place called Phuoc, which is at the very bottommost area of Vietnam. This is a little further away from Ho Chi Minh also. It has beautiful beaches. It has an amusement park, which is a replica of how a European city would look like. So it's beautiful if you want like a beachy vacation vibe. Phuoc is another place that you should go to, and it has its own airport, so it's very convenient to travel to this place as well. So depending on how many days that you have, you can certainly divide the place into 3 layers. That is your Hanoi and around, Da Nang and around, and Ho Chi Minh and around. Now how to travel within Vietnam. So अगर हम बात कर लें Hoi An to Da Nang या फिर Da Nang to Ho Chi Minh, so there are 3 modes that you can take. You can either take a bus, you can take a train, or you can take a flight. Now buses and trains take about 15-16 hours for each of these legs. Uh, you get a lot of comfortable buses जो आपको शायद 1500 के आसपास में पड़ जाएंगी per person. But the journey is gonna be extremely long. Sleeper buses हैं, comfortable होंगी. मे बी आप अगर बस लेते हैं तो आप अपनी पूरी ओवरनाइट एक होटल का भी कॉस्ट बचा लेते हैं. बट इफ द रोड ट्रिप्स आर नॉट योर थिंग, देयर इज अनदर मोड व्हिच इज ट्रेन्स. Trains are again like extremely comfortable, like much more comfortable as compared to your buses, but they end up taking more or less the same time as your buses, and they cost as much as how you would end up spending for a flight ticket. So the best, so I would recommend that instead of taking a train, you might as well go for a flight.
तो आपको 1-2 घंटे की फ्लाइट जर्नी पड़ेगी एंड दैट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3 to 4,000 rupees approximately, wherein you will have to purchase your hand baggage, check-in baggage separately if it is VietJet. But again, that is going to be pretty reasonable considering you end up saving a lot of time and very convenient mode of transportation. तो ये तो बात हो गई कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी कैसे ट्रैवल करें। अगर आप बात करना चाहें कि विद इन सिटी कैसे ट्रैवल करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली वियतनाम में नहीं है। आपको सबवेज, मेट्रोज नहीं दिखेंगे। यस, बसेस आर देयर, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बस कहाँ जाएगी एंड दे मे नॉट रियली बी ऑन टाइम। सो आई वुडंट रियली रेकमेंड दैट। आई वुड सजेस्ट कि आप जो अपना होटल ले वो सिटी सेंटर के अंदर लें, सो दैट everything around all the touristic places are very walkable from there. And if you have to go to a distant location within the city, then you can take a cab. Now Uber and Ola aren't really what you can find there easily, so uska ek alternative that they have over there is called Grab, which is extremely convenient. It works exactly the same way as Uber. तो आप बस ऐप लीजिए एंड आप बुक कर दीजिए कैब कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, एंड विद इन 2 to 3 minutes you will have the cab on your doorstep. And it is pretty reasonably priced too, so it's very similar to जितने डिस्टेंस के लिए शायद इंडिया में पे करेंगे वाया Uber, उससे में भी 1.5x आप समझ सकते हैं आपको उतना प्राइस वहाँ पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सिम कार्ड के बारे में। विद इन वियतनाम आपको या तो आप इंडिया से इंटरनेशनल पैक लेके जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप वियतनाम जाके वहाँ से एक और सिम कार्ड ले लें, लोकल सिम कार्ड, विच वुड बी मच मोर इकोनॉमिकल। तो आप या तो एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले सकते हैं, विच आई विल सर्टेनली नॉट रेकमेंड, क्योंकि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो आपको $25 to $35 में कई सारे ऑप्शन दिखा देंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच डेटा यू नीड। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट वाईफाई से टैक्सी बुक करके सिटी सेंटर पहुंच जाइए, एंड सिटी सेंटर में कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी आपको, वहाँ से आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं, विच विल बी मच मोर इकोनॉमिकल in the range of say 600 to 1500 depending on which variant you choose. There are 3 primary telecom providers in Vietnam. Viettel is the most popular and the best one of all of these, and that is what we also use. तो उसका आपको बहुत अच्छा एक तो कवरेज मिल जाता है थ्रू आउट वियतनाम, in even in the outskirts of the cities, and you get a good 3G and 4G internet speed across Vietnam. So I would highly recommend Viettel. अब नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी एक्सचेंज। तो आप इंडिया से वियतनामीज करेंसी उतना नहीं ले जा पाएंगे शायद, डिफिकल्ट टू गेट, एंड विद इन वियतनाम अ लॉट ऑफ प्लेसेस विल नॉट एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट, अ लॉट ऑफ दीज विल एक्सेप्ट ओनली कैश पेमेंट। तो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ से डॉलर्स अगर हो सकता है तो ले जाएं, एंड वहाँ पे आप डॉलर्स एक्सचेंज करा सकते हैं फॉर देयर लोकल करेंसी। नाउ अगेन आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू गेट इट एक्सचेंज ऑन द एयरपोर्ट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इंस्टेड आप सिटी सेंटर में जाइए एंड वहाँ पे जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, स्पेशली दी गोल्ड शॉप्स, वहाँ से आपको बेस्ट रेट्स मिल जाएंगे फॉर योर मनी दैट यू आर गेटिंग एक्सचेंज्ड ओवर देयर। सो अब बात कर लेते हैं फ्लाइट बुकिंग्स की फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम एंड रिटर्न। आप स्काई स्कैनर जा सकते हैं, दैट इज़ माई गो टू प्लेस, एंड वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे फ्रॉम वेयर यू वांट टू गो टू विच सिटी एंड ऑन व्हाट डेट्स। यू कैन सी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या टाइमिंग ऑप्शंस हैं। मेजरली इंडिगो और VietJet, ये 2 एयरलाइंस हैं जो ऑपरेट करती हैं फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। आपको अगर आप VietJet ले रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप VietJet की वेबसाइट से डायरेक्टली बुक कर लें। तो आप स्काई स्कैनर पे ऑप्शंस देख सकते हैं, लेकिन बुकिंग के लिए आप जा सकते हैं VietJet की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड यू कैन बुक दी फ्लाइट्स। वन पॉइंट टू नोट हाउएवर इज इसके अंदर आपको लगेज सिर्फ हैंड बैगेज इंक्लूडेड मिलेगा, चेक इन लगेज आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ता है बाय पेइंग एक्स्ट्रा। सो फॉर अस जो हम लोगों ने टिकट्स बुक किए थे, इट कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 21-22,000 रिटर्न टिकट्स फ्रॉम मुंबई टू हनोई एंड देन हो ची मिन टू न्यू दिल्ली, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस हम लोगों ने जो एडिशनल चेक इन बैगेज भरा था दैट वाज अबाउट 2,000 रुपीज फॉर अ 20 kg check in baggage extra, which is quite reasonable, and within वियतनाम के लिए जो फ्लाइट बुकिंग्स आप करेंगे, फॉर एग्जांपल हनोई टू दनांग या फिर दनांग टू हो ची मिन,
उसके अंदर 20 kg baggage was around 700 rupees per person, so that was extremely economical. अब आ जाते हैं होटल्स के ऊपर. तो माई गो टू प्लेटफॉर्म इज booking.com. वहाँ पे आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाते हैं एंड यू कैन इजीली स्विच बिटवीन द फिल्टर्स टू आइडेंटिफाई कि आपको कैसा होटल चाहिए. तो पहले तो आपको होटल चाहिए या हॉस्टल प्रेफर करेंगे. अगर आप if you're traveling as a bachelor or only 2-3 people as friends, you can go for the hostels as an option. These are centrally located and they have a very young crowd, so the vibe of the place is going to be really nice. And they're very reasonable as well. In fact, आपको शायद 500 to 800 rupees per person per night के अंदर आपको एक dormitory bed मिल जाएगा. And most of these places even have breakfast included at the price, so that's going to be a great option. But if you want more privacy, if you want a better room, you can go to any of these hotels that are listed on the platform, and these will cost you somewhere around say 4 to 5,000 per room per night. So अगर आप डबल शेयरिंग में लेते हैं ये रूम, तो आपको per person 2 to 2,500 में ये per night के लिए रूम मिल जाएंगे. A nice 3-star or a 4-star hotel will be at this price. Another thing to note over here is कि अगर आप ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड लेते हैं अपने होटल प्लान में, you can get a decent number of vegetarian options also in most of these hotels. And even outside, it is not that difficult to find vegetarian options since veganism is on the rise. There are a lot of vegan or vegetarian options. एंड इनफैक्ट हर सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे. तो अगर आपको अपना देसी खाना खाना है तो आपको वो भी इजीली मिल जाएगा. एंड अगेन दैट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तो आपको इंडिया से खाना ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा. अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो है बजट. तो अगर हम टोटल बात करें कि फ्लाइट टिकट्स इंडिया रिटर्न will be around 20 to 25,000. आपका वीज़ा will be around 2,000 rupees. आपका जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स आप लेते हैं, अगर आप सपोज तीनों लोकेशंस कवर करते हैं, हनोई, दानांग एंड हो ची मिन, दैट विल बी समवेयर अराउंड 8,000. होटल अगर आप कंसिडर करते हैं अराउंड 2,500 पर रूम पर पर्सन पर नाइट. एंड सपोज आप 7 days के लिए रुक रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 to 8 days, so that will be another 20,000 rupees for the hotel. एंड आप उसके बाद जो इंटरनल अट्रैक्शंस की बात कर लें, जैसे बाना हिल्स जाते हैं, सो दैट विल बी अराउंड 3-4,000. अलोंग बे विल बी अराउंड 3,000. कूची टनल्स का पैकेज आप लेते हैं, दैट विल बी अराउंड 1,000. सो सारे आप इंटरनल अट्रैक्शंस, म्यूजियम्स, एवरीथिंग कंबाइंड विल बी समवेयर अराउंड 10,000. एंड उसके बाद आपका बच जाता है इंटरनल ट्रैवल, जो आपकी टैक्सीज लेते हैं आप, या फिर फूड अगर आप पर मील आप 400 पर पर्सन, 300-400 पर पर्सन पकड़ लीजिए. तो ये सब मिसलेनियस मिला के शायद आपको कुछ 5 to 10,000 फूड एंड इंटरनल ट्रैवल. सो इफ वी क्लब ऑल ऑफ दिस, इट विल बी समवेयर अराउंड 60 to 70,000, जिसके अंदर आप एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रिप पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं इन वियतनाम. So I hope this answers most of your questions and this will help you in planning your Vietnam trip better. If you have any more questions, you can put them down in the comment section and I'll try and answer to each one of you guys. So if you like the video, please like, share and subscribe to the channel also. It really motivates us. And until then, keep traveling, keep exploring and keep wandering.